वेलकम टू AGPG स्टडी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के B.sc एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल फाइल रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। सोशियो अबाउट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ अ विलेज सर्वे शेड्यूल। रिस्पोंडेंट नेम, आपका नाम, आपके विलेज का एड्रेस और जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू विलेज। विलेज से रिलेटेड जितनी भी जनरल इंफॉर्मेशन है, लाइक नेम ऑफ द विलेज, नेम ऑफ द ग्राम पंचायत, नेम ऑफ विलेज अंडर ग्राम पंचायत, नेम ऑफ ब्लॉक एंड डिस्टेंस फ्रॉम विलेज, लाइक दिस। नेम ऑफ ग्राम प्रधान विद मोबाइल नंबर, ऐसे ही सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। In the village, and these are experiment 2 object to know about preparation of schedule. Meaning of schedule. Schedule is a form of set जिसमें कि क्वेश्चंस कंटेन रहते हैं रिलेटेड टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड नीड्स, जो कि फिल किए जाते हैं बाय रिसर्च बाय हिमसेल्फ और कुछ इंफॉर्मेशन लेके फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स इन द फेल सिचुएशन इंटरव्यू और definition is given by Good and Holt. Schedule is the name usually applied to set of questions which are asked and filled by an interviewer in face-to-face situation with other person. Main characteristic of schedule: first, proper sequence of questions; second, easy and clear questions; third, limited size, accurate communication, acute response, use of cross questions, direct contact, high response. Next point is clear and accurate response of questions, collection of correct information, facility for observation, collection of data without hesitation. Easy statistical analysis. Demerits of schedule. Problem of universal question investigated, biased by respondents, difficulty of selection of training. Point should be considered at the time. The research should be well awarded about the subject survey. Simple and short questions should be formed. Questions should be asked in simple local language. Questions should be asked in sequences. The research would make efforts to get more information with minimum questions. Experiment 3. Objective: the gaining practical knowledge about the working of basic rural institutions. Definition of institution by H.E. Warners. Social structure and the machinery through which human society organizes, directs, and executes different activities required to satisfy human needs. And second definition given by Horton. An institution is an organized system of social relationships which embodies certain common values and procedures and meets certain basic needs of society. Then political institution, three-tier system of Panchayati Raj. First, village level. Village level, village panchayat is the smallest unit of this institution. Gram Pradhan and its member. Block level, block panchayat is the medium level unit of political institutions. And third, district level, district panchayat is the third unit of political institution. And then village panchayat. For the development of village and their many communities are established. First, administrative committee; second, planning and development committee; third, construction committee; fourth, educational committee; fourth, water management committee; and fifth,
Sixth, health committee. Village panchayat may establish other communities according to their need. क्षेत्र पंचायत समिति समिति एक लोकल गवर्नमेंट बॉडी होती है जो कि इंटरमीडिएट लेवल पे वर्क करती है. वर्क्स फॉर द विलेज ऑफ द तहसील दैट टुगेदर आर कॉल्ड डेवलपमेंट ब्लॉक एंड द ऑफिसर्स अपॉइंटेड आर, और जो भी ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं उनको बीडीओ बोलते हैं, मीन्स ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स. एंड देन डिस्ट्रिक्ट पंचायत, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. दिस इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ मंडल परिषद और डिस्ट्रिक्ट पंचायत. इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज पंचायती राज सिस्टम. सो ये लोकल गवर्नमेंट के अंदर आता है जिसमें कि 3 टियर होते हैं. फर्स्ट होता है, इसमें ग्राम सभा में जो भी मेंबर होते हैं 18 अबव, तो ये मेंबर को सेलेक्ट करते हैं जो कि सरपंच और प्रधान होते हैं. सेकंड आता है ब्लॉक लेवल पे, इसको पंचायत समिति बोलते हैं, जिसमें कि जो भी गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, जो भी स्कीम्स होती हैं, वो बीडीओ और प्रधान और कुछ विलेज के प्रधान इन सबको कैसे विलेज में इम्प्लीमेंट कराना है ये बताते हैं. एंड देन सबसे अबव पे जो होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसको ज़िला परिषद भी बोलते हैं. इसमें एमएलए और एमपीज आते हैं. एमएलए एमपीज आईएएस के अंडर वर्क करते हैं. सोशल इंस्टीट्यूशन, द फैमिली. The role of family in the village area is the most important in the form of social institution. In Indian society, there are mainly two types of families are found: separate family, combined family. In separate family includes husband, wife, and unmarried children. And combined family includes husband, wife, children, and grandmother, etc. Economic institution. In rural area for the welfare of farmer, some economic institution work as a committee. Service cooperative society, multi-purpose cooperative societies. Educational institution. In rural area, primary school and junior high school used to provide the basic education to the rural area. Schools are formed by the government or the basic education department. Religious institutions, temple, mosques, church, other institutions in the form of religious institutions. The main member of these types of institution are Pandit for temple, Maulvi for mosque, etc. Thank you for watching my video. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.